Good morning, students. Today we will learn new chapter presence of living organism in water samples. Materials required for this experiment are two or three types of water samples. We take here tap water, river water and sewage water. We mark the test tube with the name of water or A, B, C. Methylene glue for the staining, slide, forceps, dropper, petri dish, distilled water, candle or a burner, match box and microscope for observation. So now, firstly collect the samples from different water bodies marked with A, B and C. Here we take three types of water sample: tap water, river water and sewage water. So now let's start the practical procedure. Now let's start the experiment. Firstly, we take any one type of sample and put one drop of water on a slide and take another slide and spread the water with the help of slide in a thin film and let to dry. So for dry, because we have not much time, so we can use candle for लाइट. अपनी स्लाइड को सुखाने के लिए हम कैंडल का हेल्प लेते हैं. इससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारी स्लाइड पर रह जाएंगे और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा. So do not heat it on a very high flame. So it is dry. Now we take a methylene glue and drop it on a slide. Again spread this methylene glue on a slide with the help of other slide and keep it for some time. इसे रखने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेरिंग हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम बिना स्टेरिंग किए किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. तो कुछ समय तक हम इसे रखेंगे. तो नाउ स्टेरिंग हो गई है. अब विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर, दिस इज अ डिस्टिल वाटर की हेल्प से हम इसे वॉश कर देंगे. जितना भी एक्स्ट्रा स्टेन है वो इसमें से निकल जाएगा. देख रहे हैं हमने सारा स्टेनिंग इसका हटा दिया है.
अब इस पर ऐसे ही यह ग्लिसरीन की पुट द ग्लिसरीन and put cover slip. So the slide is prepared and now we observe it in microscope or a hand lens observation. Now we observe the slide in a microscope. So now we observe in microscope, you can see different microorganisms present in water, tap water. See the different microorganisms in this Daphnia, rotifers, water strider, mosquito larva, water scorpion, dragon fly and diatoms, bacteria, different types of microorganisms. You can see the different type of water samples. So now we repeat the practical with the river water and sewage water one by one. हमें तीनों सैंपल्स के साथ वाटर सैंपल करके हमें इसी तरह स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. So the precautions. So the main precautions for this experiment are take the 2 or 3 samples of water and only one drop, put the 1 drop of every sample. Second, do not keep the slide on a high flame of candle or burner, because on the high temperature all microorganisms destroyed. Thank you. Have a nice day.